50% दीजिए, किसानों को आत्महत्या से रोकिए। जमीन अधिग्रहण के मामले में बहुत संघर्ष के बाद 2013 का जो कानून बना उसको लागू करके किसानों को मुआवजा दीजिए। इससे भागिए नहीं, स्थिति बिगड़ती जा रही है। मैं कुछ क्षेत्रीय मांगों को उठा करके अपनी बात खत्म करूंगा। हमारे यहाँ 2-2 एनटीपीसी है। देश को हम बिजली देते हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर जो समझौते हुए हैं बिजली देने के मामले में, रोजगार देने के मामले में, ग्रामीणों की लगातार उपेक्षा चल रही है, इसलिए भारी विक्षोभ बढ़ रहा है। इस पर ध्यान दिया जाए। इंद्रपुरी जलाशय बिहार में बहुत जरूरी हो गया है, उसका निर्माण किया जाए। बारून बिहटा रेलवे लाइन, डेहरी डुमरांव बलिया रेलवे लाइन, डेहरी में रेल कारखाना प्रधानमंत्री ने भी घोषणा किया था, और डेहरी में सुअरा हवाई अड्डे के बारे में भी। तो आप जब बिहार जाते हैं तो केवल ऐसे ही ब्लैंक घोषणा मत करिए, उसको लागू भी करिए। और एक बात जो सुधाकर जी ने भी उठाया कि जो गरीब राज्य हैं उनको सहायता दीजिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। जातीय जनगणना करा करके देश में जो उपेक्षित हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, उनको बजाबता सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, आर्थिक न्याय मिलना चाहिए। इन मांगों को दोहराते हुए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप जो एक खाका खींच रहे हैं कि हम अमीर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, अगली पीढ़ी पर कितना कर्जा हम छोड़ करके जा रहे हैं, इस बात को भी ध्यान रखिए कि कर्जा कितना बढ़ता जा रहा है। इन आंकड़ों को भी आप थोड़ा सदन में ले आइए, अगर हिम्मत है तो ले आइए, और नहीं तो ऐसे ही अपना पीठ मत थपथपाते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री एन के प्रेमचंद्रन जी। Thank you very much, Madam Chairperson. Madam, before commencing my speech in the various supplementary demands for grants submitted to this House, I would like to raise a serious technical matter of grave concern regarding the parliamentary procedure in reappropriation of grants, for which I am seeking a specific clarification from the Minister, and also I am seeking a ruling from the Honorable Speaker also. Madam, in the supplementary demands for grants, in the introductory note itself, it is clearly stated that besides token provision of 126 lakhs is being sought, 1 lakh for each item of expenditure for enabling reappropriation of savings in cases of involving new service or new instrument of service. This is the introductory note. Madam Chairperson, as far as new introduction of new instrument of service, we all know that it is a relatively large expenditure that is result of a significant expansion of an existing policy or activity. The reporting limits for a new instrument of service are up to 20% of the original appropriation, up to 100 crores, whichever is higher. Amounts exceeding 20% of the original appropriation or above rupees 100 crores require mandatory approval from the Parliament. Madam Chairperson, you may please to see to incur the expenditure on a new instrument of service, prior approval from the Parliament is required through supplementary demands for grants. In an emergency, the contingency fund of India can be used to meet the expenditure until Parliament authorizes it. This arrangement should only be used when the Parliament is not in session. Madam, there are two methods of reappropriation. We all know, I need not explain. You are having savings in a particular head. If you are having a saving, it can be brought into another head. And the another way is you take money from the contingency fund of India and later reappropriate through the supplementary demands for grants. Madam, if you are taking advance from the contingency fund of India, you have to get the prior approval of the Parliament, or immediately after the taking of the advance, you have to lay a statement on the Parliament that we have taken an advance. I would like to know from the Honorable Minister, Madam Chairperson, this is the Delegation of Financial Powers Rules 2024, paragraph 5, very clearly stipulated that in such cases, the following procedure recommended by the 6th Lok Sabha Committee on purpose laid on the table in their 4th report should be observed. Quotes, as far as possible before such withdrawal is made, the concerned minister may make a statement on the floor of the Lok Sabha
for information giving details of the amount and the scheme for which the money is needed. In emergent cases, however, where it is not possible to inform the members of the Parliament in advance, the withdrawal may be made from the Contingency Fund of India, and soon thereafter, a statement may be laid on the table of the Lok Sabha for the information of the members, unquote. Madam Chairperson, I would like to know from the Minister, I am seeking a clarification, whether, because I am very positive of time, see, if you go through the grant number 71, grant number 71 is Ministry of New and Renewable Energy, in which 100 crores being recouped advance withdrawn from the Contingency Fund of India for meeting expenditure under the PM Surya Ghar Mufti Bijli Yojana, and 35 crores towards grants for creation of capital assets. That means 100 crores of rupees have already been advanced or taken as advance for the grant demand number 71. I would like, and so many reappropriations are there. I am not going to all the examples. I would like to know from the Honorable Minister and the Ministry that whether a statement as stipulated by the rules is being laid on the table of the House. If it is not made, kindly state the reason. I would like to seek a specific clarification from the Minister, and if such a statement is not laid on the House, I would also seek a ruling from the Honorable Speaker regarding this matter. This is a technical objection which I would like to make. Madam Chairperson, I would like to come to the demands for grants. Madam, this is 24-25 first batch of supplementary demands for grants consisting 83 grants and 3 appropriations. Gross additional expenditure is 87,762 crores of rupees. Out of which the net cash outflow is 44,142.87 crores. Technical supplementary is 43,618. Token supplementary demand for grants is 1.26 crores and totaling coming to 87,762 crores. And out of which 13,000 crores is for agriculture and allied activities. And the second one is Department of Telecommunication, 12,000 crores. And the Ministry of Defense is also 12,000 something crores. So, Madam, now it has become the usual practice of this Parliament, bringing series of supplementary demands of grants in every financial year. Public Accounts Committee observed that the ministers and the departments have been obtaining supplementary grants without conducting a proper scrutiny of the expenditure incurred and likely to be incurred by them during the financial year. This is happening due to the lack of the foresight of various ministries and departments. For example, I would like to take demand number 50. Demand number 50 is regarding the cabinet, because it is adjustment, it is savings also. But in 50, what is the amount which is being used? 4,787.44 crores for the cabinet expenditure. For what it is being used? It is being used for 4,666 crores. It is being used for the capital expenditure for the cyber security research and development. See, my question to the ministry is it an unforeseen emergent expenditure? This indicates bad budget planning process. So I urge upon the ministry to adhere. I urge upon the ministry to adhere to the strict compliance of financial rules and the directions of Public Accounts Committee to avoid supplementary demands for grants. Because the cabinet expenditure for the cyber security research and development, 4,666 crores of rupees have to be spent. It is coming as a supplementary demand of grant. What is the emergent situation? Why it is not anticipated means totally bad budgeting planning process is being laid. That has to be corrected. That is the first submission which I would like to make. Madam, coming to the state of economy, Madam, the current year GDP growth rate for the second quarter is just 5.4%. That is lowest in the last 7 quarters. But the projected GDP in the budget document is 7% real GDP, and the nominal GDP growth will be 10.5%, as stated in the budget speech by the Honorable Finance Minister Nirmala Sitharamanji. When we are proudly claiming that India is the fastest growing economy in the world, targeting to be the 3rd largest economy in the world, Madam Chairperson, kindly see by 2047 we are going
going to be the developed country, the basic genuine issues of the common people are still there. Unemployment, exponential growth of unemployment in the country, which you have never experienced in the country during the post-independent period. And the price rise, and also regarding so many other issues, price rise and poverty and all these issues are remaining as such. So it is escalating like anything. I would like to know from the Honorable Minister how you are going to address all these things. And the next point is regarding the expenditure. Madam, when the government and the ministry is coming for supplementary demands for grants, the government has to submit to the House regarding the expenditure also. The government during the current financial year is to be analyzed. So it's a monthly review of the accounts of the government of India up to October 2024. Total expenditure by the government of India so far is 24,73,898 crores. That means 51.3% of the total budget allocation has already been spent. Very good. But I would like to seek a clarification from the minister. When I examine the MSME means micro, small, medium enterprises, which is a labor-intensive sector playing an important role in the growth of economy, and the expenditure, if you examine it, is less than 15%. I have gone through the performance smart board of the Department of Economic Affairs. It is being seen that, sir, madam, it is being seen that the total budget allocation for MSME during 24-25 is 22,137.95 crores. Revised outlay, I don't know how the revised outlay now come, because the revision will come only after the financial year. Now it is coming advanced revision of outlay. I can't understand. Please clarify. That is 16,468.42 crores, and the expenditure so far is 3,992.73 crores. Means less than 50% of the total budget outlay is being spent all these 6 months regarding the MSME. And I would like to seek the clarification from the Honorable Minister why it is so low. And the major component of the allocation in the supplementary demand is agriculture sector, 13,000 crores. Madam, you know very well, madam, within 2 minutes I will conclude. You know very well that the farmers across the country on the street to protest against the shortage of the diammonium phosphate, DAP, including RSS affiliated Bharatiya Kisan Sangh, is on the streets. They are also on the striking. Doubling of farmers' income by 2022, it was one of the promise made by the minister by the Prime Minister during 2014 onwards. What happened to the doubling of the income of the poor farmers? And I would like to urge upon the Honorable Minister regarding 3 more issues, only flag points or bullet points I will say. GST of 18% on renting of commercial property, because a property which is being taken on rent, a registered person who take a rented building from an unregistered person shall have to remit 18% of GST through reverse change mechanism. That is to be reviewed. And the second point is regarding the LIC. First year commission of the LIC agents have been reduced from 25% to 20%, thereby 25 to 7% of the commission has come down. 14 lakhs of LIC agents are being suffered. That has to be corrected. It is because of the IRDA direction. Only 2 points. Cashew industry, the 2.5% of the custom duty is to be reviewed, and also the PF pension. Today morning in the 0 hour, I have already stated regarding the PF pension. All these issues have to be considered, and I am seeking strict, very specific clarification regarding all these points. With these points, I would like to oppose the supplementary demands of grants put forward to the House by the government. Thank you very much. माननीय सदस्य श्री आनंद भदौरिया जी। धन्यवाद सभापति महोदया। मैं आज सदन में सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुदान संख्या 3 विधेयक 2024 पर अपनी असहमति व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह विधेयक भारत के संचित निधि से 87,762.56 करोड़ की राशि की मंजूरी और वितरण का प्रस्ताव करता है, लेकिन इसका स्वरूप और आवंटन हमारे देश की असल जरूरतों और जनता की भलाई से कोसों दूर लगता है। सभापति महोदया, कुछ समय पहले भी हमने इस सदन में एक बजट देखा था, और आज अनुपूरक अनुदान मांगों के ऊपर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज से 1 महीने से कुछ ज्यादा समय के बाद फिर हम एक आम बजट देखेंगे, लेकिन मुझे ये आंकड़ों की बाजीगरी से ज्यादा कुछ और नहीं लगता है। सत्ता पक्ष के लोग
बड़ी जोर जोर से अभी चिल्ला चिल्ला करके कह रहे थे कि लाखों करोड़ रुपए किसानों के लिए प्राविधान किया गया है। महोदय, अगर किसानों के लिए इतना ही प्राविधान किया गया था तो मैंने 2022 के विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी को मंच से वादा करते हुए सुना था कि मार्च के बाद आवारा निराश्रित पशुओं की जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन क्या उन आवारा पशुओं के लिए कोई कार्य योजना सरकार ने बनाई है? अगर बनाई है तो ये सदन और ये देश और जनता उस बारे में जानना चाहती है। अगर लाखों करोड़ रुपए किसानों के लिए आवंटित हुए हैं तो बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक आज किसान डीएपी के लिए लंबी लंबी लाइन लगा करके पुलिस के लाठी खाने पर मजबूर क्यों है? मैंने इस देश के उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपए माफ होते देखा है, लेकिन क्या सरकार गांव के गरीब किसान का कर्जा नहीं माफ कर सकती है? हम सरकार से मांग करेंगे कि गांव के गरीब किसान के कर्जा भी माफ किया जाए। माननीय सभापति जी, जब किसान अपना हक मांगने के लिए निकलता है तो उसे पुलिस की लाठी खानी पड़ती है। आज उत्तर प्रदेश ने कई प्रधानमंत्री दिए, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, क्या उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों के लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है? क्या कोई उद्योग धंधा लगाने जा रही है जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिल सके? सभापति जी, शिक्षा और स्वास्थ्य इनकी प्राथमिकता में नहीं है। शिक्षा मंत्रालय के लिए 8,500 करोड़, स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए 7300 करोड़ प्रावधान किया गया है, जो देश की बढ़ती जनसंख्या और स्वास्थ्य संस्थानों की जरूरत के हिसाब से अपर्याप्त है। अगर हम मेडिकल के लिए देखें तो उत्तर प्रदेश के अंदर कागज पर तो बहुत मेडिकल कॉलेज बन गए हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज में न भर्ती हो रही है, न इक्विपमेंट है। और अगर हम जिला अस्पतालों की हालत देखें तो इतनी दुर्दशा है कि कुत्ते वहां हॉस्पिटल के अंदर विचरण करते पाए जाते हैं। बेड पर कुत्ते सो रहे हैं, दवाई नहीं है। हर एक बीमारी के लिए केवल एक दवाई दी जाती है, पैरासीटामॉल। सभापति महोदया, पिछड़े और गरीब वर्गों की इस अनुपूरक मांगों में अनदेखी की गई है। दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए कोई ठोस प्राविधान नहीं है। सामाजिक न्याय सशक्तिकरण मंत्रालय को 4200 करोड़, जनजाति मंत्रालय को मात्र 3100 करोड़, जो सरकार की सामाजिक जिम्मेदारियों से विमुखता को दर्शाता है। यह विधेयक सरकार की जनविरोधी नीतियों, वित्तीय अनुत्तरदायित्व का प्रतीक है। जनता की समस्याओं की अनदेखी है। गरीबी, महंगाई से निपटने का कोई ठोस प्राविधान नहीं दिखता है। और एक बात कह करके सभापति जी अपनी बात समाप्त करूंगा। जल जीवन मिशन, हर एक घर को जल, हर नल से जल, बहुत ढिंढोरा पीटा जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर जो सड़कें विगत सालों में बनी थी, आज एक एक सड़क खोद डाली गई है, पाइपलाइन डाल दी गई है। सरकार उसकी जांच कराए, रिपेयरिंग कराने का काम करे। और जो मैं ये बात दावे के साथ कहना चाहता हूं, सरकार बदलेगी और जब कभी जांच होगी तो आजादी के बाद जल जीवन मिशन सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। सभापति महोदया, आपने मौका दिया, 2 लाइन कह करके अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। सच बात मान लीजिए, चेहरे पे धूल है, इल्जाम आईनों पे लगाना फिजूल है। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य सुश्री सयोनी घोष जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अपनी पार्टी की भी आभारी हूँ फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मैडम, supplementary demand for grants is a constitutional pre-arrangement, and I agree that it should definitely not be objected. But it also raises the question as to why does the government need further allocation when it has not been able to spend what it already has. In financial year 24, government's final consumption expenditure was 14%, but it decreased to 4.4% in financial year 25 second quarter. This means that the government has spent much less this year as compared to last year. In the first quarter of 24-25, government spending was 4.15 lakh crore, and many cited model code of conduct a reason for spending less. But in the second quarter, it further decreased to 4.1 lakh crore.
Madam, to my simple understanding, this grant is being demanded from the exchequer, but this is the money which is collected from the people and it is meant to be spent for the people. Since Professor Shogata Rai has already spoken about the technical aspect, today I choose to speak on what this government has delivered to the people of this country, the utilization of resources and departments it's seeking additional grants for, and also its complex relationship with the state of West Bengal. Sir, इनके बुलडोजर के चलते मैडम भारत के लोग सवाल पूछना भूल गए और भारत की जनता आजकल इतनी भूखी है कि खाने को धोखा भी खा लेती है। मैडम, भारत में एक मिडिल क्लास जो एक साल पहले एक वेजिटेरियन थाली 100 रुपए में खाता था, आज वही वेजिटेरियन थाली 152 रुपए की हो गई। टमाटर की कीमत 247% बढ़ गई, आलू की कीमत 180%, लहसुन 128% और तेल, नमक, आटा, मैदा 18%। पहले आम आदमी पॉकेट में पैसा लेके बाजार जाता था और थैली भरकर सामान लाता था, लेकिन अमृतकाल में आदमी थैली भरकर पैसा लेके जाता है और पॉकेट में आलू, टमाटर, प्याज लेके घर वापस आता है। सर, माननीय वित्त मंत्री ने पहले कहा था कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और आज उनके विचार में इन्फ्लेशन इज एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम, महंगाई एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है। तो विश्व गुरु, विश्व बंधु इस अंतरराष्ट्रीय समस्या का समाधान क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मैम, 74% of Indians are unable to afford a healthy diet. The household savings have plunged to a 50-year low. Around 48% of the households in this country are facing a financial crisis क्योंकि उनका खर्चा उनकी कमाई से ज़्यादा है. The economic inequality in India is a 100-year high. The country's GDP growth rate for the second quarter 24-25 decreased to 5.4%, which is the lowest in 2 years. The government's total debt has reached a staggering 176 lakh crore, and the total debt is expected to soar up to 185 lakh crore by the end of the financial year. आज आपके उधार की वजह से हर हिंदुस्तानी पर 1.25 लाख का बोझ चढ़ गया और आप उनकी मजबूरी को अपनी ताकत समझते हैं। बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की प्रदेश युवा अध्यक्ष होने के नाते मुझे हर दिन कई नौजवानों से बात करनी पड़ती है। वो मुझे ये पूछते हैं कि मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, अर्थात 10 साल में 20 करोड़ नौकरी। उन नौकरियों का क्या हुआ, उन वादे का क्या हुआ? मैं बस उन्हें यही कह पाती हूँ कि पत्ते तो झड़ते हैं, उठाता है कोई कोई, वादे तो सभी करते हैं, निभाता है कोई कोई। Ma'am, as per the latest report by CMIE, the unemployment rate has risen to 9.2% in June 2024 as compared to 4.9% in 2013-2014. Female unemployment rate is much higher at 18.5% in June 2024 as compared to 7.7% in 2013-14. Around 37% of working women are unpaid. In rural areas, this figure is at a horrific 43%. प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अगर ऐसा ही है तो भारत के लोग आज देश छोड़ के क्यों जा रहे हैं? 2018 से लेके 2023 के बीच 6,70,000 भारतीय ने अपनी नागरिकता त्याग दी। सिर्फ 2022 में ये संख्या करीबन 2,25,000 की थी। In 2022 alone, 7,500 high net worth individuals with a net worth of more than 8.3 crore or more left India. नवंबर 2022 से सितंबर 2023 सिर्फ 10 महीने में 96,917 Indians were arrested attempting to cross the United States illegally. मोदी जी कहते हैं कि वो सबके साथ है, मगर ये आंकड़े बोलते हैं जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। और बंगाल के साथ तो कुछ अलग ही रिश्ता है इनका। The relationship is that of quid pro quo. ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। मतलब वोट है तो नोट है और वोट नहीं तो नोट नहीं। As per the available reports, as on 19 July, rupees 1.23 lakh crore is already due from the government of West Bengal against flagship programs like Manrega, PM Awas Yojana, Gram Sadak Yojana, National Health Mission, Central Food Subsidy. Further, 40,806 crore is projected dues against these schemes, bringing the total amount to a staggering 1.71 lakh crore. Madam, health care की schemes में सिर्फ फंड हमको दिया नहीं जाता क्योंकि कलर कोडिंग मैच नहीं करता है। So आप सबका साथ सबका विकास जो बोलते हैं, is it hinging on color coding?
आपको रंग पसंद नहीं तो आप बंगाल के लोगों को पैसा नहीं दोगे और फिर आप आके बोलते हो कि हम बंगाल में जीत क्यों नहीं पाते। मैम, दिस इज द रीजन, दिस स्टेप मदरली एटीट्यूड, जिसके लिए बंगाल के लोग हर बार इनको बड़े बड़े रसगुल्ला खिलाकर वापस दिल्ली भेज देते हैं। Even after making several attempts to crush our aspirations and our economy, Bengal government stands tall and true towards the commitment towards its people. बंगाल में सिर्फ दीदी है तो मुमकिन है। The West Bengal government started transferring money to the bank accounts of 21 lakh people who worked for 100-day scheme without receiving any payments from the central government for Manrega. Even before Ayushman Bharat, in Bengal, Shastra Shati, a cashless scheme was launched, providing treatment cost up to 5 lakh for per person belonging to any strata of the society. आज कलकत्ता के किसी आलिशान प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ पे एक अमीर आदमी की चिकित्सा होती है, वही बगल वाले बेड में एक गरीब मजदूर, एक गरीब किसान की भी ट्रीटमेंट होती है। यही है ममता बनर्जी का विकास। और आपके अमृत काल में द कॉस्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट हैज बीन डबल्ड इन द लास्ट 5 years। आप फार्मास्यूटिकल्स की, सर आरजीकर पे बात ना बोले, आपकी सीबीआई पे अभी तक कुछ बोल नहीं पाए। हम लोगों ने जो, हमारी पुलिस ने जो बोला था, दे आर स्टिल स्टिकिंग टू दैट, सो उसके बारे में मत बात करें, ठीक है। आप उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें ना सर। सर, मेडिकल इन्फ्लेशन इज एट 14%। रेगुलरली लिए जाने वाले दवाइयों की कीमत 50% बढ़ गई। आप सिविल एविएशन के लिए ग्रांट्स मांग रहे हैं। एक एक डोमेस्टिक फ्लाइट, उसकी राउंड ट्रिप की टिकट 20 से 30 हजार में बिक रही है। आम आदमी आज हवाई चप्पल पहन के हवाई जहाज नहीं चल रहा, आम आदमी हवाई चप्पल बेच के हवाई जहाज चल रहा है। यू आर डिमांडिंग फंड्स फॉर एजुकेशन but conveniently ignoring the fact that 11 lakh children have dropped out of school according to your own data. आज भारत में सिर्फ 47.51% स्कूलों के पास कंप्यूटर की फैसिलिटीज है और उसमें 33% के पास इंटरनेट कनेक्शन। In law and justice, you are not been able to provide legal aid to more than 1% of the eligible population. In public enterprises, 5.1 lakh public sector jobs have disappeared in the last 10 years. Railway में करीबन 2.5 लाख पोस्ट बाकी हैं और उसमें से वैकेंसी है इन क्रिटिकल सेफ्टी कैटेगरीज। नए भारत में आजकल ट्रेन पटरी के ऊपर कम और पटरी के बाहर ज्यादा चलती है। मुझे दुख लगता है इस सदन में ये कहते हुए मैडम कि मैंने अपने लोकसभा क्षेत्र जादवपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक बारुईपुर कोबी सुभाष मेट्रो एक्सटेंशन की मांग की थी। मुझे डिपार्टमेंट से ये चिट्ठी मिली जिसमें उन्होंने लिखा है दैट दिस प्रोजेक्ट is not economically viable and this project is unremunerative। तो आपको अगर सब जगह से पैसा चाहिए तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि लोग खुद के लिए आपको वोट देते हैं कि आपके फायदे के लिए वोट देते हैं। मैं आपको इतना ही बोलना चाहती हूँ, दिस वाज द रीजन, अपने प्रॉफिट के लिए आज इन्होंने सीनियर सिटीजन का कंसेशन भी बंद कर दिया और सीना ठोक के ये बोलते हैं कि 2022-23 अर्थ वर्ष में हमने 15 करोड़ वरिष्ठ नागरिक से 2242 करोड़ कमाए। धन्यवाद माननीय सदस्य। मैं 2 बात और बोल के खत्म कर दूंगी कि लोकसभा पे खर्च करके क्या फायदा मैडम, जब यहाँ पे विपक्ष को बोलने का अधिकार ही ना हो। लोकसभा के लिए भी तो ग्रांट मांगा है ना मैम। और अभी सर बोल रहे थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो 10 साल पहले मोदी जी ने लॉन्च किया था, लेकिन उसके 80% पैसे सिर्फ पब्लिसिटी और मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिए। आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में ना आप बेटी को पढ़ा पा रहे और ना आप बेटी को बचा पा रहे। बंगाल आए और देखिए कि ममता बनर्जी ने विधानसभा में अपराजिता एक्ट में बिल पास किया है, कन्याश्री किया है। Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. I would like to put forth my views supporting the first batch of supplementary demands for grants 24-25, which and appropriation bill for the 24-25. The first batch of supplementary The first batch of supplementary demands, this bill, madam, it includes supplementary proposals pertaining to 83 demands and 3 appropriations. Madam Chairman, this bill, I would like to say Viksit Bharat 2047. It is not merry slogan for us.
It is not just play of words. It is Honorable Prime Minister's commitment towards Viksit Bharat, the sanctity, the budget in the last 10 years, it has more sanctity and credibility, maximizing the value and impact of hard-earned taxpayer money. I can suffice with the facts and figures. The GDP, which between 14 and 24 used to be $2 trillion, has gone up by $3.7 trillion today. And when we show good figures, madam, the opposition says the growth is normal, the growth is organic. But when some parameters go down, then they show the fingers at the government, saying that it is the fault of the government. Madam, today, a senior leader of the Congress party specially spoke on fiscal federalism. Our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, several occasions, he spoke about cooperative federalism. Madam, even if you see the budget since 2017 and 18, the budget presentation has been shifted to February 1st instead of the last working day of the February. This really helps advance the expenditure cycle by 2 months. And it also helps states. States are now able to plan their own budgets better, as they are now aware of the details of the centre's fiscal plan of the upcoming year. This reform has helped the state governments plan their project financing, counterpart funding, implementation of central projects, and borrowing requirements well in advance. Madam, there is continuous false narrative on tax devolution by the opposition. Chairman, Madam, the Congress and its alliance partners' allegation about injustice to South India in particular overlooks the transformative fiscal reforms introduced by the NDA government under the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. I would like to set the record straight. Madam, who can understand better the needs of the states? As the Chief Minister of Gujarat, our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, the first Prime Minister, who increased the devolution funds of the states from 30 to 32%, which was there during UPA regime of 10 years. They increased only 2%. From 32%, he increased it to almost 42%. That means to say, during UPA regime, it was only 81,795 crores. But during 14 and 24, our tax devolution was 2,77,468 for Karnataka alone, madam. Time and again, the Congress leaders from the Karnataka government, they make an allegation that the government is showing stepmotherly treatment towards them. If that is so, the grant in aid from Government of India between 2004 and 14, it was only 60,779 crores. As against during our regime, it is 2,08,832 crores, which is increase of 243%, or it is 3.4 times more, madam. So I would like to ask the opposition, you talk only about the cooperative federalism only when it comes to the devolution of funds or grant in aid. When it comes to programs, they don't care, madam. Karnataka government was the first state
when our Honorable Chief Minister Basuraj Bommai was there, we implemented the national education policy way back in 2020. But soon, when the Congress government came into Karnataka, the first thing they did is they abolished new education policy. They reversed it. They said they will come out with a new education policy, state education policy. Today, madam, there is neither new education policy nor a state education policy in Karnataka. The higher education, the education is in limbo. The students of higher education is facing hardship. I would like to ask the leader of opposition, is this nyay that you are talking to cater to your youth? For Yuva, is this nyay that you want to give? Chairman, madam, regarding the farmers' welfare, the NDA government has done remarkably. If you see the kind of allocation, no UPA government has ever done it. During 2013 and 14, up to 13 and 14, they had allocated very minimal. But our government has spent over 3.24 lakh crores only in Kisan Samman Yojana. Madam, for the entire agricultural sector, the money allocated was only 22,000 crores. But in 23-24 alone, our government has allocated 1,53,000 crores. This is our firm commitment towards agriculture and farming community. In 13-14, a loan of 7 lakh crores was extended to the farmers. But whereas in our government under the leadership of Narendra Modi ji, the loan is increased to 19 lakh crores to the farmers, madam. Especially after the COVID pandemic, when the prices of fertilizers increased in the world market, Prime Minister Shri Narendra Modi ji did not pass any burden onto the farmers. Whatever the price was there of urea or DAP in 2018, it still exists even till today, madam. In spite of geopolitical situation, post-COVID situation. And when you come to MSP, madam, MSP also, I'll give you 2-3 examples. The paddy, the support price, what was given during Congress regime, it was only 1,310 rupees per quintal. But today it is about 3,600 rupees per quintal. Similarly, jowal, pulses, oil seeds, every food commodity, there is a substantial increase, madam. Today, the inflation, which was 12.2%, one of our learned senior member of the opposition benches remarked and opined that our finance minister should have done PhD from economics. I beg to differ from his views, madam, because Madam Nirmala Sitharamanji, from the time she has taken over, with so much of global challenges, she has proved she is one of the most prudent, efficient, honest and successful finance minister that India ever had. And she will go down in the history for being so. Madam Kamaraj the Great, he was not educated academically, but he had the heart, he had the mind. He was the first person in the country to give food grains free of cost to the poor, Antyodaya. So you need the good heart and the good mind, madam. Dil aur dimag chahiye. So, madam,
regarding agriculture. Lot of people debated by lip sympathy the sector of agriculture or the farming community cannot become rich overnight. By implementing right programs, only we can achieve this, madam. If you see this, the agriculture growth rate is 3.4% in NDA's regime. It was minus in Congress regime, madam. 9,000 packs, multi-purpose communities we have established. This is a revolutionizing economics in the rural part of India. It can empower the communities by fostering the economic growth, madam. That is why the FPOs, the establishment of FPOs is the game changer in revolution, madam. Lastly, I would like to make some strong points about how UPA dealt during their regime, madam. For 60 years, the opposition did only two things: doles and deals. They rolled out doles for the poor, deals with the rich and cronies. India has transformed in the last 10 years, breaking the convention of traditional politics. From mega scams, we have reached to do mega projects. From 2G coal scam to expressways, tunnels, Vande Bharat trains. From entitlement to empowerment, madam. From the merry Congress guarantees to the skill development. From symbolism to substance. From one aims to today we have established 26 aims, madam. From tokenism to totality, that is from nationalization of banks to opening of 60 crore bank accounts in this country, madam. This is our firm commitment. This is our firm dedication to ensure that we build a robust nation under the leadership of Shri Prime Minister Shri Narendra Modi ji. So I strongly believe this is not even totality, less than 1% of the nationalization of banks to budget outlay, opening of 60 crore bank accounts in this country, madam. Thank you very much for the opportunity. Our firm commitment. This is our firm dedication to ensure that we build a robust nation under the leadership of Shri Prime Minister Shri Narendra Modi ji. So I strongly believe this is not even totality, less than 1% of the nationalization of banks to budget outlay, opening of 60 crore support in this country, madam. Thank you very much for the firm commitment. This is our firm dedication to ensure Honorable President, that we build a robust nation under the leadership of Shri Prime Minister Shri Narendra Modi ji. So I strongly believe this is not even totality, 1% of the nationalization of banks to budget outlay, 60 crore support in this country, madam. Thank you very much for the firm commitment. This is our firm dedication to ensure that we build a robust nation under the leadership of Shri Prime Minister Shri Narendra Modi ji. So I strongly believe this is not even totality, 1% of the nationalization of banks to budget outlay, 60 crore support in this country, madam. Thank you very much for the firm commitment. This is our firm dedication to ensure that we build a robust nation under the leadership of Shri Prime Minister Shri Narendra Modi ji. So I strongly believe this is not even totality, 1% of the nationalization of banks to budget outlay, 60 crore support in this country, madam. Thank you very much for the firm commitment. This is our firm dedication to
To your notice, sir, in regard to agriculture and irrigation, Telangana is primarily a agrarian state, with over 55% of the population depending on agriculture. There are significant issues with the minimum support price system in India. While the government notifies MSP for more than 20 crops, the procurement process is severely limited and primarily focused on rice, wheat, and coarse grains. To a limited extent, pulses. In 2024, these issues sparked large scale of farmers' agitation, where farmers demanded that the government procure all the crops covered under MSP and make a legal guarantee. In the last 10 years, more than 112,000 farmers suicides, and they are talking as if they have done everything in the last 10 years. People of this country is very happy under this rule, and there is nothing happened in the last 70 years. It's only 10 years has happened, but there was 112,000 farmer suicides were happened, sir. And due to this government policies not catering the needs of the farmers just used by this government as a vote bank. But in last 2-3 years, there are a lot of protests against this government, but still this government is not listening their demands, instead doing lathi charge, which they did 2 days back also in outside Delhi. India's agriculture exports have declined 8.2% in the fiscal year 23-24, totaling 48.82 billion, falling short of target 60 billion set by the Agriculture Export Policy 2018. I want to say, especially minimal investment in agriculture research, which was really successful. Investment in agriculture research has decelerated since 2011, but each rupee invested yields a return of nearly 13.85, that is 13 times on this investment, sir. The highest among farmer-related activities, according to the working paper by National Institute of Agriculture, Economics and Policy Research. Sir, I also want to get note, sir, 1 minute, sir. It's not over, sir. It's just I've got another 2 issues. It is regarding Palamur Rangareddy lift irrigation, sir, which was the promise made by the government then when the bifurcation happened, but until now it has not got the national status, sir. And in regard to the cotton paddy farmers, other day I met the minister also. The procurement by the Cotton Corporation of India, they are creating lot of nuisance which has to be sorted out, sir. But we talk very great about it. And I'll come to the health sector, sir. Union government of public health expenditure, domestic general government expenditure on health in the developed countries is around 8.7 of GDP, sir. Sir, listen to me. Sir, I am the first timer. At least I am putting something as that this is useful information. I have written here, I am just putting it. It's not 2 minutes over. I'll tell you some figures, sir. India, in contrast, India's public health spending is up massively low. According to the WHO and World Bank, India's general government spending on health has been just around 0.9 to 1.2 of GDP in the recent, sir. Sir, one thing, sir. Okay, Manyaniya Shri K. Ishwar Swami ji. Yes, sir, please start, Ishwar Swami ji. 1 minute. Sir, I am cut down. I am removing all the papers. No. This is the state Telangana. I have got the chance. Sir. Ishwar Swami ji, if you are not... மாண்புமிகு தலைவர் அவர்களே,
24-25ஆம் ஆண்டிற்கான கூடுதல் மானிய கோரிக்கை பற்றி பேசுவதற்கு வாய்ப்பு வழங்கியதற்காக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நமது பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் பிப்ரவரி 2016 விவசாயிகளின் வருமானத்தை 2022ஆம் ஆண்டுக்குள் இரட்டிப்பாக்கப் போவதாக அறிவித்தார். ஆனால் கடந்த 10 ஆண்டுகளில் விவசாயத்துறை மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட துறையாக உள்ளது. அது தொடர்ந்து வீழ்ச்சியை கண்டு வருகிறது. மேலும் விவசாயிகளின் நிலைமை நாளுக்கு நாள் மோசமாகி வருகிறது. 2022ஆம் ஆண்டிற்குள் விவசாயிகளின் மாத வருமானம் ரூபாய் 22,610 என அரசு இலக்கு நிர்ணயித்தது. ஆனால் உண்மையில் 2021 அரசு வெளியிட்ட விவசாய குடும்பங்களின் நிலைமை மதிப்பீட்டு ஆய்வின்படி மாதத்திற்கு ரூபாய் 10,218 மட்டுமே. அது மட்டுமின்றி விவசாயிகளின் கடன் தொகை 2013ஆம் ஆண்டில் ஒரு விவசாயிக்கு 47,000 ரூபாயாகவும் 2024ஆம் ஆண்டில் 74,121 ரூபாயாகவும் உயர்ந்துள்ளது. அரசாங்கம் 2016ஆம் ஆண்டில் பிரதமர் பசல் பீமா திட்டத்தை மிகவும் ஆரவாரத்துடன் அறிமுகப்படுத்தியது. ஆனால் அது அரசாங்கம் முறையாக செயல்படுத்த தவறிவிட்டது. இதனால் கோடிக்கணக்கான விவசாயிகள் பாதிக்கிறார்கள். விவசாயிகளின் கோரிக்கைகள் நிராகரிக்கப்பட்டு காப்பீடு நிறுவனங்களே பெரும் லாபம் ஈட்டி வருகின்றன. ஒன்றிய அரசின் தரவுகளின்படி பிரதமர் பசால் பீமா திட்டத்தின் சுமார் 4 கோடி முதல் 6 கோடி விவசாயிகள் பதிவு செய்துள்ளனர். ஆனால் 22-23ஆம் ஆண்டு மதிப்பீட்டில் 7.8 லட்சம் விவசாயிகள் மட்டுமே 3,878 கோடி ரூபாய் வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் 2016-17 முதல் 21-22 வரை ரூபாய் 57,620 கோடிகள் வருமானம் ஈட்டியுள்ளன. தமிழ்நாட்டின் தென்னை நகரம் என்றும் அழைக்கப்படக்கூடிய பொள்ளாச்சி தொகுதியை நான் பிரதிநிதிப்படுத்த விரும்புகின்றேன். தேங்காய் விளைச்சல் அதிகமாக இருப்பதால் நாட்டில் வலுவான தென்னை நார் தொழில் வளர்ச்சிக்கு வழிவகுத்து வருகிறது. இந்தியாவின் மொத்த தென்னை நார் உற்பத்தியில் தமிழகம் சுமார் 60% உற்பத்தியை செய்து வருகிறது. இதன் மூலம் ஆண்டிற்கு சுமார் 3,000 கோடி விற்பனையாகி வருகின்றது. ஆனால் கடந்த சில வருடங்களாக தண்ணீர் பிரச்சனை, போதிய மழையின்மை, குறிப்பாக வேர்வாடல் நோய் போன்ற பிரச்சனைகள் தென்னை உற்பத்தியை மிகவும் மோசமாக பாதித்துள்ளது. சுமார் 40% மரங்கள் ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால் நமது தேங்காய் ஏற்றுமதி மிகவும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்துடன் பிரதமர் பசல் பீமா திட்டம் நமது விவசாய துயரங்களை மேலும் அதிகப்படுத்தியுள்ளது. ஒன்றிய அரசும் பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தில் உள்ள சிக்கல்களை தீர்ப்பதற்கு பதிலாக திட்டத்துக்கான ஒதுக்கீட்டை குறைக்க துவங்கியுள்ளது. 23-24ஆம் நிதியாண்டில் திருத்தப்பட்ட மதிப்பீட்டின்படி பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்துக்கான ஒதுக்கீடு ரூபாய் 15,000 கோடியாகும். ஆனால் இந்த ஆண்டு பட்ஜெட்டில் அரசாங்கம் ஒதுக்கியது ரூபாய் 14,600 கோடி மட்டுமே. மானியங்களுக்கான துணை கோரிக்கையில் காப்பீட்டு திட்டத்திற்கு குறைந்தபட்ச நிதியும் அரசு ஒதுக்கும் என்று எதிர்பார்த்தோம். ஆனால் பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்திற்கு மேற்கொண்டு நிதி ஏதும் ஒதுக்கப்படவில்லை. நமது விவசாயிகளின் துயரங்களுக்கு ஒன்றிய அரசு செவிசாய்க்காத நிலையில் நமது மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் தலைமையிலான தமிழக அரசு விவசாயிகளுக்கு கூட்டுறவு வங்கியில் வட்டியில்லா கடனாக மே மாதம் 2021 முதல் டிசம்பர் 2023 வரை ரூபாய் 35.85 லட்சம் கோடி ரூபாய் வழங்கி உள்ளது என்பதை பெருமையோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இது நமது திராவிட மாடல் அரசின் சாதனையாகும். இப்போது கல்வித்துறைக்கு வரும்போது 24-25ஆம் ஆண்டில் பள்ளி கல்வித்துறைக்கு மட்டும் ரூபாய் 73,008 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இது 23-24ஆம் ஆண்டுக்கான திருத்தப்பட்ட மதிப்பீட்டை விட 0.73% அதிகம். 23-24 பட்ஜெட் மதிப்பீட்டில் உயர்கல்விக்கான பட்ஜெட் ஒதுக்கீடு ரூபாய் 44,095 கோடியாக இருந்தது. இது திருத்தப்பட்ட மதிப்பீடுகளில் ரூபாய் 57,240 உயர்த்தப்பட்டது. ஆனால் இந்த ஆண்டு பட்ஜெட் மதிப்பீடு ரூபாய் 47,620 கோடி. இது 23-24ஆம் ஆண்டுக்கான திருத்தப்பட்ட மதிப்பீட்டை விட ரூபாய் 9,624 கோடி குறைவாகும். மேலும் 23-24இல் ரூபாய் 400 கோடியாக இருந்த ஆராய்ச்சி மானிய ஒதுக்கீட்டை இந்த ஆண்டு 350 கோடியாக ஒன்றிய அரசு குறைத்துள்ளது. சர்வ சிக்ஷன் அபியான் திட்டத்திற்கு தமிழ்நாட்டுக்கு நியாயமாக வழங்க வேண்டிய ரூபாய் 2,100 கோடியை ஒன்றிய அரசு நிறுத்தியுள்ளது வன்மையாக கண்டனத்திற்குரியது. தேசிய கல்விக் கொள்கையை சில சரத்துக்கள் தமிழ்நாட்டின் இருமொழி கொள்கைக்கு முற்றிலும் எதிராக உள்ளதால் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. இதனால் நிதியை நிறுத்துவது சர்வாதிகார போக்கல்லவா? இதனால் தான் தமிழ்நாட்டில் பாராளுமன்ற தேர்தலில் உங்களுக்கு தோல்வியை பரிசாக கொடுத்துள்ளார்கள் என்பதை தெரிவித்து இறுதியாக ஒரே ஒரு செய்தியை சொல்லி நிறைவு செய்த விரும்புகின்றேன். இதுபோன்று நமது பொருளாதாரத்தின் முக்கியமான துறைகளை ஒன்றிய அரசு தொடர்ந்து புறக்கணித்து வருகிறது. அரசாங்கம் அவர்களை தவறுகளை திருத்திக் கொள்வதற்கு பதிலாக எதிர்க்கட்சி ஆளும் மாநிலங்களுக்கு நிதி நெருக்கடியை உருவாக்குவதில் கவனம் செலுத்துகிறது. எனது உரையை ஒரே ஒரு திருக்குறள் முடிக்க விரும்புகின்றேன். வேலென்று வேண்டி தருவது மன்னவன், வேளாதும் கோடாதெனில் என்று வள்ளுவருடைய குரல். மேற்படி குரலுக்கு முத்தமிழர் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் பின்வருமாறு உரை எழுதினார். ஒரு அரசுக்கு வெற்றியை தருவது
பகைவரை வீழ்த்தும் வேலல்ல, மாண்யனீய ஸ்ரீ குடிமக்களை வாழ जुगल வைக்கும் किशोर शर्मा மலையாள செங்கோல் தான். இந்த இடத்தில் செங்கோல் என்று அவர் கூறுவது செம்மையாக ஆட்சி செய்வதே தவிர முடிக்கின்ற தலைவர்களே எந்த ஒரு அடையாள சின்னங்களும் அல்ல. எதிர்க்கட்சி ஆளும் மாநிலங்களுடன் சண்டையிடுவதை நிறுத்திவிட்டு முக்கிய துறைகளை கவனம் செலுத்தி போதுமான அளவு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யுமாறு ஒன்றிய அரசை கேட்டு நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். माननीय श्री जुगल किशोर शर्मा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। सभापति जी, पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे वर्ष 2024 और 2025 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों पर भाग लेने का अवसर जो प्रदान किया है। महोदय, 87,762 करोड़ रुपए की लागत की राशि की मांग की गई है। मैं इन अनुदान की अनुपूरक मांगों के पक्ष में खड़ा हुआ हूं, समर्थन करता हूं। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है आज भारत। ये मैं नहीं कह रहा, आज विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियां जो हैं वो ऐसा मान रही हैं और ऐसा कह रही हैं। महोदय, कृषि और किसान को राहत देने के लिए प्रावधान रखा गया है। इनमें विशेष तौर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए भी जहां पर 3132 करोड़ रुपए की जो है वो मांग की गई है। यो काम चल रहे हैं और जिन योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है उसे पूरे करने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि नौजवानों को स्वरोजगार के अवसर देकर मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम जो है वो आज उठाया है। आज गरीब से गरीब व्यक्ति को भी आशा बंधी है कि हम भी आगे बढ़ सकते हैं और अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं। ये विश्वास जो है आज देश के गरीब को नरेंद्र भाई मोदी जी पर है। और विशेष तौर पर अगर मैं जन धन योजना का जिक्र करूं तो हम सब जानते हैं कि आज जन धन योजना के खाता धारकों के खाते में आज 20,000, 30,000, 50,000 गरीब से गरीब परिवार में है और उनका मनोबल इससे बढ़ता है और उनको लगता है कि हम भी इस समाज का हिस्सा हैं। ये अवसर भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज देश के गरीब को जो है वो दिया है, जिसका मजाक कभी कभी कांग्रेस के हमारे भाई उठाते थे, लेकिन आज उनको भी समझ आई कि ये जनधन खाते का क्या लाभ जो है वो गरीब को मिल सकता है। महोदय, स्वास्थ्य क्षेत्र में जो योगदान मोदी सरकार का रहा है शायद ही इससे पहले किसी सरकार का रहा होगा। मोदी सरकार ने जो कदम स्वास्थ्य क्षेत्र में उठाए हैं वो बहुत ही सराहनीय है। मैं आयुष्मान भारत योजना का जिक्र जहां पर कर रहा हूं और विशेष तौर पर अब सड़क दुर्घटना में भी घायल हुए व्यक्ति के लिए इलाज जो है वो फ्री में होगा, कैशलेस होगा और उसके लिए 127 करोड़ रुपए की राशि जो है इन मांगों में जो है वो रखी गई है। ये गरीब को एक बहुत बड़ी राहत देने वाली बात होगी कि भाई जो अपना इलाज जो है वो नहीं करवा पाते थे। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश एवं देश की जनता की बेसिक सुविधाओं की ओर ध्यान दिया जा रहा है, जो कि पहले नहीं दिया जाता था। लोभ लुभावने नारे दिए जाते थे लेकिन अमल कोई नहीं होता था। देखिए, आज एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, हाईवे हो, एक्सप्रेस हाईवे हो, ये जो हमारा बिजली क्षेत्र में जो क्रांति आई है, जल जीवन मिशन के माध्यम से पानी की बात हो, इसके अलावा भी कई सारी बड़ी बड़ी योजनाएं जो है
वो आज देश के लिए समर्पित जो है वो की गई हैं। महोदय, यूपीए और विशेष तौर पर कांग्रेस के समय बजट में रखा गया पैसा भी प्रदेशों तक नहीं पहुंचता था, इसके प्रमाण है। लेकिन आज, और ना ही वहां लगता था, लेकिन आज जो कहा जाता है वो दिया जाता है और वो जमीन ग्राउंड पर लगता भी है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं सभापति जी, प्रधानमंत्री जी की लोकप्रिय योजना का ही परिणाम है कि आज हर गरीब के खाते में 20, 30, 50 हजार रुपए उसके खाते में है, जो उस गरीब का मनोबल बढ़ाने का काम करता है, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया। लेकिन विशेष तौर पर मैं बहनों की अगर बात करूं तो आज सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से देश की बहनों का जो सहयोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है, उससे बहनों का मनोबल बढ़ा है और वो आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ी हैं। हम सब जानते हैं कि पहले बहनों को घर चलाने के लिए, घर की रसोई चलाने के लिए अपने मर्दों की तरफ देखना पड़ता था, बड़ों की ओर देखना पड़ता था। लेकिन आज देश की बहनें जो हैं वो किसी पर निर्भर नहीं है, और घर का खर्चा वो स्वयं भी चला सकती हैं और वो अपने आप में गर्व भी महसूस करती हैं कि वो उस देश की नागरिक हैं जिस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जो देश के गरीब और गांव की चिंता करते हैं। महोदय, बैंकिंग क्षेत्र में भी काफी सुधार जो है वो हुए हैं और बैंकों के स्वभाव भी बदले हैं और काम करने का तरीका भी बदला है। आज बैंक जो है वो आदर मान सम्मान के साथ गरीब को कुर्सी देकर बिठाते हैं और उसकी जरूरत को भी पूरा करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस गरीब के पीछे आज देश के प्रधानमंत्री जो है वो खड़े हैं। महोदय, आज सड़क पर रेडी और फड़ी लगाने वाला व्यक्ति भी अपने आप में गर्व महसूस कर रहा है, गर्व महसूस करता है, क्योंकि मोदी जी ने, वो कहता है कि मोदी जी ने हमें इस लायक समझा एक सेकंड रुकिए कि हम अपने काम को बढ़ाने के लिए बैंक का सहयोग ले सकते हैं। जी माननीय सभासदों, अगर सभा की सहमति हो तो सभा की कार्यवाही 8 बजे तक बढ़ा दी जाएगा, क्योंकि मेरे पास इस विषय पर बोलने वाले की लंबी सूची है। सब ओके सर? धन्यवाद सभापति जी। सभापति जी, मैं कह रहा था कि आज सड़क पर रेडी और फड़ी लगाने वाला भी अपने आप में गर्व महसूस करता है और वो कहता है कि मोदी जी ने हमें इस लायक समझा कि हम अपने काम को बढ़ाने के लिए बैंक का सहयोग ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं और एक के बाद एक लोन जो है उन्हें देने की व्यवस्था जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने की है। महोदय, आप कंक्लूड कीजिएगा कृपया। जम्मू कश्मीर में भी बड़ी सारी योजनाएं तेज गति के साथ आगे बढ़ रही हैं और वित्त मंत्री जी ने हमें भरोसा भी दिलाया है कि ये प्रोजेक्ट, ये योजनाएं जिस तेज गति के साथ आगे बढ़ रही हैं, इनमें कोई रुकावट जो है वो नहीं आएगी। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक राहत की बात है। महोदय, मैं अंत में कहना चाहता हूं कि भारत पाक सीमा पर बनी डिच, नहर और बांध सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया है, पर कई वर्षों से सीमावर्ती क्षेत्र में, चाहे वो शंभ विधानसभा हो, मढ़ हो जा, आरसपुरा जा, बिश्ना हो, वहां के किसानों को उसका मुआवजा जो है वो 2012 से नहीं मिल पा रहा है किन्हीं कारणों की वजह से। मैं चाहता हूं कि बजट में इस अनुपूरक मांगों में उनका भी ध्यान रखा जाए ताकि किसानों को मुआवजा जो है वो मिल सके। महोदय, हर क्षेत्र के विकास के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों का मैं समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री एम श्री भरत जी। धन्यवाद। थैंक यू सर। द माइक।
It's on. Yeah. Please permit me to speak from this chair, sir. Thank you, Chairperson, sir. I'm here to speak for the first batch of supplementary demand for grants on behalf of the TDP. Although the budget seeked is 87,762 crores, the actual cash outflow of 44,000 crores is less than 1% of the overall budget. By any count, I would say that that's good planning. Leading an organization myself, I've often found that in the middle of the year, we deviate more than 1%. So I'd like to acknowledge and appreciate that. Some points spoken by the opposition in terms of the growth, on inflation, on the manufacturing sector. I think there seems to be rhetoric, a lot more than a call for action, because on one count we say that inflation shouldn't grow, but on the other count we're saying that the repo rate also shouldn't be cut down. I would request that the consideration of the government in cutting the repo rate to kickstart the manufacturing and increase its growth, which would overall lead to the growth of the Indian economy, is much needed, and I would definitely ask for that. In this supplementary demand for grafts, I'd like to speak about some specific points, in particular for the steel ministry. I'd like to acknowledge and thank the Finance Minister, the Prime Minister, for allocating 1650 crores of fund to revive the RINL steel plant. I'm very happy to state that from a verge of almost being shut down with only one furnace running, now there's 2 furnaces running at more than 100% rated capacity over the last month and a half or 2. And with the continued support of the government, I'm sure that all 3 furnaces will be running and we'll be able to take care of the salaries of all of the staff members. I'd like to acknowledge this. The second thing that I'd like to bring up is on the footwear industry. I have a peculiar problem, Chairperson. So I have a foot condition which requires certain kind of footwear. And I was searching for it in India, but I couldn't find it. I had to go to Germany, and a friend of mine got a cast made for me, and I got that footwear. That's what I'm wearing right now. But then when I went to the Standing Committee on Commerce, I realized that there is a Footwear Design and Development Institute in the Commerce Ministry. With the support of Honorable Minister Piyush Goyal ji, I went and visited the center, and I was very happy to see the kind of research that is happening over there. Alas, most of India doesn't even know about the research that is happening. So I request the Finance Minister to consider this footwear industry and the Footwear Design Institute to really proliferate its activities to the wider nation, because the footwear industry is not very concentrated today. It's quite disorganized. And the other thing I'd request is to separate it from the leather industry, because not all footwear is leather now. Footwear, all different kinds of materials are coming into it. The next point is urban planning. We see, when we think of big cities in India, when we say Bangalore, a lot of people remember traffic. When we say Delhi, people think of pollution. And when we say Mumbai, people worry about cost of living. So the money that happens to be transferred to urban local bodies is a mere 0.5% of the GDP, but the contribution of cities to our GDP is almost 60%. So I request that if there are good cities that are planning for the future, if they can be incentivized through grants for major infrastructure development, that would help us abate these problems preemptively instead of being reactive. I think that would be a great thing for the nation. Coming to the state of Andhra, finally, I'd like to request that over the last 5 years, because of the potential malintent and delay of many critical projects like Amravati or Polavaram, the costs of these projects have increased from 25% to 55%. And we request the support of the central government in line with what has already been announced in this budget to develop our capital city of Amravati and to complete the Polavaram project by 2028. And finally, I'd like to end with a point on the state that if we want unemployment to go down, if we want the GDP to grow really quickly to achieve our goal of 2047 Viksit Bharat, as the money dedicated to the census, I would also request some money to be considered for the skill census to be done nationwide, similar to what we're speaking in the state of Andhra. If we can bridge the gap between what the industry needs and what available workforce is there, and start bridging the gap through skill development and education, I think this demographic dividend that exists will become a huge dividend for the nation and help not just state of Andhra Pradesh prosper, but all of the states of India prosper. And with these few points, I'd like to thank the chairperson for the time given to me to speak. And I would like to thank the finance minister again for the support extended to the state of Andhra Pradesh and to the steel plant in my parliament of Visakhapatnam. Thank you. Good, very good, very good.
माननीय श्री पप्पू यादव जी। धन्यवाद महोदय। मैं माननीय वित्त मंत्री महोदया जी से ब्लैक मनी के बारे में जानना चाहता हूँ और नोटबंदी जो भारत की सबसे प्रधानमंत्री का स्वर्णिम निर्णय था, उस नोटबंदी के बाद आपने काला धन के बारे में भी जानकारी नहीं दी, कितना पैसे आए उसकी भी जानकारी नहीं दी, जाली नोट में 10 लाख करोड़ से ऊपर के लगभग कितने जाली नोट मनी का बैंक से गैपिंग है उसकी भी जानकारी नहीं दी, कितने पैसे आपने अकाउंट में दिए लोगों को 15 लाख रुपए आपने उसकी भी जानकारी नहीं दी। तो हम तो पहले आपसे नोटबंदी जीएसटी के बारे में हम सिर्फ इतना कहेंगे, ये जीएसटी बड़े व्यापारियों के चोरी का सबसे बड़ा रास्ता है और मिडिल क्लास व्यापारियों का हिंदुस्तान में एक कपड़े की कीमत है हमारी 200 रुपया और जीएसटी भी हम देंगे 200 रुपया। मिडिल क्लास को कितना मुनाफा होता होगा यह भारत सरकार का दिल ही जानता है। हम इस पर कुछ और नहीं कहेंगे। हमारा दूसरा चीज है, मंत्री जी भ्रष्टाचार पर कुछ आप अलॉट करिए पैसे को, इसको खत्म करने के लिए माननीय इस पर एक अलग बजट पप्पू यादव जी आप चेयर को एड्रेस यह सबसे बड़ा प्लीज काइंडली एड्रेस। यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज, बिहार को 5% जीएसटी इस बार आपने कम क्यों किया, ये आपको बताना चाहिए कि बिहार को 5% बजट आपने इस बार कम किया है, वो किस आधार पर किया है। दूसरी चीज, झारखंड का लगभग 1,36,000 करोड़ रुपया आपने जीएसटी का आप रोक रखा है, आपको ये भी बताना चाहिए। तीसरी चीज, 400 रुपया कब तक आप पेंशन देंगे, कब तक? ये जो पेंशन जितना दे रहे, क्या कभी आम आदमी का वृद्ध पेंशन या और भी पेंशन, इसको क्या 2,000 रुपया या 1,000 रुपया बढ़ाने की आपकी कोई योजना है या नहीं? चौथी चीज, आवास योजना जो आप देते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना जो आपका सपना है, अच्छी बात है, उसको आप इस राशि को कब बढ़ाएंगे? ये राशि बहुत कम है और इससे किसी का भी सपना पूरा नहीं हो सकता, ये राशि गमन हो जाता है। ओडीएफ जो शौचालय की व्यवस्था है, इसमें भी राशि बिल्कुल कम है, इसमें भी बढ़ाने की जरूरत है। चौथी चीज, पांचवी चीज, आंगनबाड़ी, ममता, आशा, रसोईया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आंगनबाड़ी को सेविका को 25,000 और सहायक सेविका को 18,000, आशा और रसोईया को आपने इस पर कोई ग्रांट में भी और बजट में भी आपने नहीं लाया। आप कहते हैं